पाकिस्तान में सियाहत की बहुत अच्छी जगहें हैं। इस बात का इजहार डायरेक्टर सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी मिशाल कुरैशी ने किया। हम पाकिस्तान के साथ टूरिज़म के काम करना चाहते हैं, जिससे दोनों मुल्कों के बारे में मालूमात होगी और ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। मज़ीद उन्होंने कहा, Saudi Tourism Authority is a proud and welcoming the launch of Nusr platform officially in Pakistan today, made possible by each and every one of you sitting in this room today. This is your platform and customized to enable you to promote Saudi tourism and the Umrah Plus packages to this country. We are here in this wonderful country with a message of our King that the Saudi has opened its door to the international world. Not just for Hajj and Umrah, but taking a step further into leisure, culture, heritage, and the amazing nature and landscape Saudi has to offer to its visitors. Saudi Arabia is going through a massive transformation and is investing heavily in this industry. And the reason behind this is to give to its travelers the top experiences in the years ahead, dreaming to perform their Umrah, but then allowing them the opportunity to continue their spiritual journeys and explore this beautiful country. The Saudi government Umrah visas within 24 hours, and travelers with valid UK, US or Schengen visa are eligible for e-visa on the Saudi website or eligible for visa on arrival in Saudi Arabia. Together, we're now working on taking these few steps further. We will be increasing the types of visa for better and smoother processes. We're going to be working towards increasing and creating the seat capacity and better air connectivity between both countries. And we are looking at increasing the hotels and the room keys in the specific cities in the kingdom. The official platform, unified platform that have two channels, B2B marketplace, which we call it Nusik Business, which will be launched in the new release, and B2C platform that be the current website and the application. Beyond Makkah and Medina for other cities like Jeddah, Taif and Al-Ula, that covering several target of audience across all family members, several days option, and have a wide variety of interest across the year. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام. My name is Dareen and I'm here to take you through a journey through Saudi Arabia, focusing on Umrah and spiritual journeys. Now, just as a reminder, as my colleague Mishal has mentioned before, we have three types of e-visa where you can use to visit Saudi Arabia. The first is the stopover visa or the transit visa, where you can apply if you are flying through our national carriers. You can have up to 96 hours transit in Saudi Arabia. The second visa or e-visa is that if you are a holder of UK, US, and Schengen visa, you're eligible to apply for an e-visa or visa on arrival. And lastly, if you have family and friends residents in Saudi Arabia, they can invite you to apply to visit them, and you're eligible for an e-visa. You can also check further details if you visit our nusuk.com websites. Now, for today's presentation, we're going to take you through a journey to explore locations in Saudi Arabia that are beyond Umrah. And since we are in the port city of Karachi, we'll start with the port city of Jeddah. Jeddah is very significant to not only to Saudi Arabia but to the Islamic world, giving it has been the port of pilgrimage for the longest time, and it has been also a port of trade and a central of culture. To explore the cultural aspect of Jeddah, 30 minutes away from the airport, you can visit Al-Balad, which is historical Jeddah. It's an amazing transformational experience where you can walk around the old city of Jeddah. It's a UNESCO World Heritage Site
Wherever you walk around Jeddah and you look up, you will see the wooden nawasheen, which is the wooden windows and balconies and rooftops, which is an example of the authentic architecture of the city. Now, we will be talking about Nusuk Business Platform, what this platform has to offer. And before we go into it, I want you to think of this as a journey that taps into your pain points when doing your business in Saudi Arabia. The first station or the first step is to gain information, gain knowledge about Saudi Arabia, about Umrah and Ziyarah as well. So if you have limited information or if you are not sure about something, the e-learning platform is the place you should go on. So it is a gamified learning experience where you can learn about Umrah, Ziyarah, learn about Saudi Arabia, about our culture, about very essential information on how to plan the trip for your visitors. So this is the first step that you can go on and experience. स्क्रीन पर सियाहत की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और CEO मिनिस्टर ऑफ हज सऊदी अरबिया DG सऊदी एयरलाइन के अलावा 150 बिजनेस ऑनर पाकिस्तान आए हैं। वीनस के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, The Pakistani market is very promising for the Saudi country. Actually, we came here just to promote the hotels in Mecca and Medina especially. We have so many attractive rates for the Pakistani market, and we came here just to introduce the Al-Rashhi investment company properties in Mecca. We have around 4 hotels or 5 hotels under the umbrella of Al-Rashhi. We have 4 Points by Sheraton, we have Shaza Hotel, we have Crown Plaza in Medina, we have Millennium Copthorne, and we have as well Park Inn by Radisson. So we are 5 hotels representing Al Rashhi Investment Company, and I believe for the number of people we have seen today, I believe inshallah it will be a very successful season for all of us. How many Egyptians every year visit Saudi Arabia? I'm talking about Pakistani people visiting Saudi Arabia. We can say for Umrah around now 800,000, and as a gentleman from Nusuk, he said that we are waiting to receive around 2 million inshallah this year, 2 million people from Pakistan, and inshallah we are ready to help and to serve them well inshallah. Thank you very much. मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, मैं CEO हूँ fanatic.com, जो कि एक सऊदी अरेबिया बेस्ड जो है वो वेबसाइट है और पोर्टल है। हमारा जो है पाकिस्तान में ऑफिसेज़ हैं, इसके अलावा जो है वो दुनिया भर में और मुख्तलिफ जगह पे ऑफिसेज़ हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं सऊदी डेलीगेशन के साथ, जिसका मकसद जो है वो पाकिस्तान के जो मुतमरीन हैं उनको ये बताना है कि जी अब सऊदी अरेबिया में आपके पास उम्रा पे जब आप जाते हैं तो और क्या क्या अवेलेबिलिटी है टूरिज़म के हवाले से, जिसके बारे में जो है वो ताइफ सऊदी अरेबिया में जद्दा और उससे रिलेटेड और बहुत सारी जगहों के हवाले से बात हुई है। असल में जो पैगाम है वो ये है पाकिस्तान के लोगों के लिए कि अब सऊदी अरेबिया जब आप जाएं तो उसको एक उम्रे में अब एक उम्रा प्लस का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके मुताबिक आप स्पिरिचुअल जो है वो हिस्टोरिकल साइट्स पे जा सकते हैं। मसलन इस वक्त हमने एक पैकेज लॉन्च किया है टूरिज़म का, जिसमें आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रास्ता जिस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हिजरत फरमाई थी, उस रास्ते पे जाना मुमकिन है। बहुत सारे ऐसे कुएँ मौजूद हैं जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया और वहाँ पर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पानी भी पिया। तो ये जो जितनी हिस्टोरिकल साइट्स हैं अब उन पर जाना मुमकिन है। उसके लिए हम बहुत ही जो है मुनासिब कीमत के अंदर अपने मुतमरीन के बजट के हिसाब से ये सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप जो है वो umrahcompanions.com और fanatic.com जो है हमारी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर आप जो है वो हमारे साथ जो है रब्ता कर सकते हैं। मैं खालिद चौधरी हूँ, मैं सऊदी अरेबिया से। ये कस्वा कंपनी है, इट्स वर्किंग फॉर हज एंड उम्रा ट्रांसपोर्टेशन होटल्स के बारे में सिंस 1981, और हम इधर आए हैं और माशाल्लाह बहुत लोग आए हैं, बहुत खुशी हुआ है, और वी होप एवरीवन वर्क विद अस। और पाकिस्तान माशाल्लाह बिग मार्केट, वी होप इंशाल्लाह हम अच्छे काम करें इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ। थैंक यू सो मच।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु मजमूअत हुसैन मोहम्मद हिजाजी group work to Umrah, the visa, the transport, the hotel, work in Pakistan. Alhamdulillah, you're welcome. Group come to Saudi Arabia, Pakistan, inshallah. Ahla wa sahla, you're welcome. तकरीब में सऊदीया से आए मेहमानों ने टूरिज़्म के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बहुत से मुकामात को लोग देखना चाहते हैं। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। अगर टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जाएगा तो ज़रिया मुबादला में भी बेहतरी आएगी। इस मौके पर वीनस HD TV के CEO फरहान इसरार भी मौजूद थे। सियाहत से ताल्लुक़ रखने वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन आतिफ के साथ इमरान, वीनस HD, कराची।